Hi students, welcome all of you in a video series of chemistry practicals. In last video I discussed about detection of acid radicals or anions under salt analysis, and in this video I am going to explain analysis of cations or basic radicals. So for the sake of qualitative analysis, cations are classified into following groups. So in group 0 ammonium ion comes, in group 1 lead ions are included, and group 2 is divided into two subgroups 2A and 2B. In 2A lead ion and copper ion is present, and in group 2B arsenic ions are present. In group 3 ferric ion and aluminium ions are present. In group 4 cobalt ion, nickel ion, manganese ion and zinc ions are present. In group 5 barium, calcium and strontium ions are present, and in group 6 magnesium ion is present. Now when we look at this group, various questions arises in our mind. Number 1, why lead ion is present in group number 1 as well as in group number 2A. Second question arises कि on what criteria these cations are classified into various groups. So let me answer you one by one. First question, why lead has been placed in group number 1 as well as in group number 2. एक्चुअली होता क्या है कि लेड क्लोराइड पानी में बहुत ही कम सॉल्युबल होता है, तो इसका जो HCl डालने पर, देखिए हम लोग ग्रुप नंबर 1 में हमारा ग्रुप रिएजेंट होता है डाइल्यूट HCl. डाइल्यूट HCl डालने पर लेड कम्प्लीटली कभी भी प्रेसिपिटेट आउट नहीं होता. थोड़ा बहुत जो आपका लेडाइन है वो आपका जो है वो प्रेसिपिटेट नहीं हो पाता है, और वो जो बचा हुआ लेडाइन है ना वो ग्रुप नंबर 2 में वो आ जाता है. ओके अब ग्रुप नंबर 2 की डिटेक्शन में हम लोग H2S गैस यूज़ करते हैं इन एसिडिक मीडियम. H2S गैस प्लस डाइल्यूट HCl इज़ द ग्रुप रिएजेंट फॉर ग्रुप नंबर 2. तो जब हम वो डालते हैं ना तो वो जो बचा हुआ जो लेडाइन है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, इसीलिए हमें ये सेकेंड ग्रुप में भी कुछ लेडाइन वहाँ पे हमें मिल जाता है. अदरवाइज जो लेडाइन है ना वो ग्रुप 1 का ही हिस्सा है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा. तो अब सेकंड क्वेश्चन है कि हम लोग किस बेसिस पे इन कैटाइंस को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं. तो इसका जो मेजर रीज़न है वो, इसका जो मेजर क्राइटेरिया है कैटाइंस की ग्रुपिंग का, वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और दूसरा रीज़न है कॉमन आयन इफेक्ट. देखिए हम सभी जानते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो प्रेसिपिटेशन में इसका बहुत रोल होता है. जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आयनिक प्रोडक्ट से कम होता है तो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं. ओके अब ये जो ग्रुप नंबर 1 में हम लोग सिल्वर मर्करी आइन, सिल्वर आइन और लेड आइन्स हम रखते हैं बिकॉज इनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत कम होता है. ओके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम होने की वजह से एज कम्पेयर टू आयनिक प्रोडक्ट, तो इसके जल्दी से प्रेसिपिटेट बन जाते हैं और इसकी ग्रुपिंग हम 1 में करते हैं, ग्रुप नंबर 1 में. ओके तो इसकी प्रेसिपिटेशन कब होती है, मैंने बताया था कि ग्रुप 1 का रिएजेंट है डाइल्यूट HCl, ग्रुप रिएजेंट. डाइल्यूट HCl के साथ ये जो आपके आइंस हैं वो क्लोराइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं. ओके क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बना देते हैं. अब जो कॉमन आयन इफेक्ट है वो अपना रोल कैसे प्ले करता है, ओके कहाँ प्ले करता है ये हम आपको बताते हैं. कॉमन आयन इफेक्ट ग्रुप नंबर 3 में अपना रोल प्ले करता है. देखिए हर ग्रुप का एक ग्रुप रिएजेंट होता है, तो आपको सबसे पहले तो ये समझ लेना है कि हर ग्रुप का कौन कौन सा ग्रुप रिएजेंट होता है. उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ग्रुप नंबर 3 में कॉमन आयन इफेक्ट कैसे काम करता है. देखिए 0 ग्रुप का तो कोई भी रिएजेंट नहीं होता है. 0 ग्रुप में आपके पास अमोनियम आयन मौजूद होता है. ठीक है, इसका एक अलग ही टेस्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट और नेज़ुलर टेस्ट होता है. तो इसमें हम लोग कोई भी ग्रुप रिएजेंट यूज़ नहीं करते. जो ग्रुप नंबर 1 है उसमें लेडाइन होता है और इसमें हम लोग ग्रुप रिएजेंट यूज़ करते हैं डाइल्यूट HCl. और जो ग्रुप नंबर 2 है उसमें हम लोग ग्रुप रिएजेंट यूज़ करते हैं H2S गैस प्लस डाइल्यूट HCl, ये मैंने डू कर दिया. और ग्रुप नंबर 3 में हमारा जो ग्रुप रिएजेंट होता है वो होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl. ये NH4Cl मैंने लिखा है. और ग्रुप नंबर 4 है उसमें अगेन हमारे पास H2S गैस यूज़ करते हैं एज ए ग्रुप रिएजेंट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ. यहाँ पे डाइल्यूट HCl की जगह अमोनियम हाइड्रोक्साइड रहेगा. ग्रुप नंबर 5 का जो रिएजेंट होता है वो होता है अमोनियम क्लोराइड, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
हम इसे हीट कर देते हैं और उसके बाद डालते हैं अमोनियम कार्बोनेट। ओके, तो हम इसके बाद यूज़ करते हैं अमोनियम कार्बोनेट NH4 ट्वाइस CO3। तो ये हो गया ग्रुप रिएजेंट ऑफ ग्रुप नंबर 5। और ग्रुप नंबर 6 का कोई भी स्पेसिफिक ग्रुप रिएजेंट नहीं होता है। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कॉमन आयन इफेक्ट कैसे ग्रुप नंबर 3 में काम करता है, आपको बता दें कि ये ग्रुप रिएजेंट किस तरीके से काम करते हैं। आपने कैटाइंस की डिटेक्शन शुरू करी है, ग्रुप नंबर 0 के लिए सबसे पहले टेस्टिंग आपने करनी है। आपने अमोनियम आयन की सबसे पहले टेस्टिंग करनी है। अगर अमोनियम आयन आ गया तो आपका काम हो गया, आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, आगे के ग्रुप्स की टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका ग्रुप 0 नेगेटिव आता है तो आपको ग्रुप नंबर 1 की टेस्टिंग करनी है। गिवन सॉल्ट सोल्यूशन को लेना है और उसको कोल्ड वाटर में डिज़ोल्व करना है। अगर डिज़ोल्व नहीं हुआ तो आपको हॉट वाटर में डिज़ोल्व करने की कोशिश करनी है। अगर फिर भी डिज़ोल्व नहीं हुआ तो आपको डाइल्यूट HCl यूज़ करना है। ओके, तो डाइल्यूट HCl जब आप यूज़ करते हैं, दिस इज़ द ग्रुप रिएजेंट नाउ, तो अगर आपके पास क्लियर सॉल्यूशन आ जाता है इसका मतलब ग्रुप नंबर 1 आपका एब्सेंट है। लेकिन अगर क्लियर सॉल्यूशन नहीं आया, आपके पास इसके प्रेसिपिटेट आ गए, इसका मतलब आपके सॉल्यूशन में, आपके सॉल्ट में लेड आयन मौजूद है। अब हम लेड की कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं, इसकी डिटेल हम आपको नीचे देंगे। इसके लिए हम लोग पोटेशियम आयोडाइड जो है के साथ करते हैं। ओके, और अब हम आते हैं ग्रुप रिएजेंट फॉर ग्रुप 2। अगर ग्रुप 1 एब्सेंट है, क्लियर सॉल्यूशन आ रहा है डाइल्यूट HCl डालने पर, तो इसका मतलब है ग्रुप 2 प्रेजेंट हो सकता है। तो ग्रुप 2 में आप लोगों को आर्सेनिक हम एग्जाम में देते नहीं है, लेड आयन की टेस्टिंग आप करेंगे नहीं, आप सीधे कॉपर आयन की टेस्टिंग करेंगे। और कॉपर आयन का तो कलर से ही पता लग जाता है, ब्लू कलर है, तो आप डायरेक्टली भी उस प्रोसीजर को अपनी कॉपीज़ में लिख सकते हो। तो अब हम ग्रुप टेस्टिंग के लिए, ग्रुप 1 एब्सेंट हो गया तो ग्रुप 2 के लिए हमने H2S डाला डाइल्यूट HCl के साथ। अगर प्रेसिपिटेट आ जाते हैं ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट, इसका मतलब आपका ग्रुप 2 मतलब कि कॉपर आयन मौजूद है। और अगर कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं आया तो आपको ग्रुप 3 के लिए टेस्टिंग करनी है। तो ग्रुप रिएजेंट वहाँ पे यूज़ होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये जो मैंने लिखा है, दिस इज अमोनियम क्लोराइड। ओके, तो ये दो चीज़ें डालने पर अगर आपका सॉल्ट जो है प्रेसिपिटेट बनाता है, ओके, वो प्रेसिपिटेट अगर देता है आपका, इसका मतलब ग्रुप 3 मौजूद है, या तो फेरिक आयन होगा या एल्यूमिनियम आयन होगा। ओके, अगर कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं आया तो आपको टेस्टिंग करनी होती है ग्रुप 4 के लिए। अगेन हम लोग वो ओरिजिनल सॉल्यूशन लेते हैं, क्लियर सॉल्यूशन लेते हैं, और उसमें हम H2S गैस एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड पास करते हैं। ये पास करने पर अगर प्रेसिपिटेशन होती है तो इसका मतलब वो ग्रुप 4 मौजूद हो सकता है। अब इसमें ये सारे आइंस हैं, ओके, निकल आइन, मैंगनीज आइन, जिंक आइन एंड कोबाल्ट आइन, इनमें से कोई हो सकता है। तो उनकी आगे हम लोग ग्रुप टेस्टिंग करते हैं, इंडिविजुअल टेस्टिंग करते हैं। और अगर ग्रुप 4 में कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बना तो अब आप ग्रुप 5 के लिए टेस्टिंग करते हैं, और उसमें हम लोग अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, और उसमें अमोनियम कार्बोनेट डालते हैं। और ये 3 चीज़ें डालने पर अगर प्रेसिपिटेट बनते हैं, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं, तो इसका मतलब आपका ग्रुप 5 मौजूद हो सकता है, कैल्शियम, बेरियम या स्ट्रोंशियम। अब हम इसके लिए ग्रुप टेस्टिंग अलग से करते हैं। ओके, और अगर कुछ भी आपके पास प्रेसिपिटेट नहीं बना ग्रुप नंबर 0 से लेके ग्रुप नंबर 5 के बीच में, इसका मतलब आपके सॉल्ट में मैग्नीशियम आयन मौजूद है, और हम मैग्नीशियम के लिए टेस्ट करते हैं। तो ये आपका ग्रुप रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है। तो अब मैं आपको अगले लेवल पे ले जाने वाला था कि कॉमन आयन इफेक्ट ग्रुप नंबर 3 में कैसे काम कर रहा है। आपको वाइवा में पूछा जा सकता है कि ग्रुप नंबर 3 में हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अमोनियम क्लोराइड क्यों ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो फंडा रहेगा कॉमन आयन इफेक्ट का रहेगा। देखिए, आपको ये बोलना है कि इट इज़ ड्यू टू डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, क्योंकि जब हम अमोनियम क्लोराइड डालेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जो डिसोसिएशन है ना, वो फर्दर सप्रेस हो जाएगी। ओके, और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन सप्रेस होने से, ओके, ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट,
आपके हाइड्रोक्साइड आइंस कम बन जाएंगे। और अगर आप ये अमोनियम क्लोराइड ऐड ना करते तो क्या होता, वो जो हाइड्रोक्साइड आइंस जो आपके दे रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वो ग्रुप नंबर 4, 5 और ग्रुप नंबर 6 के जो हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं ना, उनकी वो प्रेसिपिटेशन कर सकता है। और अगर ग्रुप 4, 5 और 6 के हाइड्रोक्साइड पहले ही प्रेसिपिटेट बन गए तो उनकी ग्रुप टेस्टिंग तो हो ही नहीं सकती है। इसीलिए हमको यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के जो हाइड्रोक्साइड आयन है इसकी कंसंट्रेशन को कम करना होता है। और इसकी कंसंट्रेशन को कम करने के लिए हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट के लिए ये अमोनियम क्लोराइड डालते हैं। ठीक है जी, ताकि ग्रुप नंबर 4, 5, 6 के हाइड्रोक्साइड की प्रेसिपिटेशन ना हो पाए। ओके, तो ये आपका जो है क्लासिफिकेशन का यहाँ पे क्राइटेरिया, इसको मैंने थोड़ा सा आपको इसका आइडिया दिया है। अब हम लोग चलते हैं कुछ लिस्ट पे। ये देखिए, तो ये है हमारी चॉइस ऑफ सूटेबल सॉल्वेंट्स की लिस्ट। तो इस लिस्ट में आपको यहाँ पे वाइवा के कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि वो कौन से सॉल्ट हैं जो कोल्ड वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। अमोनियम आइन, सोडियम आइन, पोटाशियम आइंस, सभी नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स एंड एसीटेट्स कोल्ड वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। ओके, और काफ़ी सारे सल्फेट्स भी डिज़ोल्व हो जाते हैं, लेकिन ये लेड, बेरियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम के जो हमारे सल्फेट्स होते हैं वो कोल्ड वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। ओके, अब हॉट वाटर में जो डिज़ोल्व होते हैं वो है लेड क्लोराइड एंड लेड नाइट्रेट। ये कोल्ड वाटर में कभी भी डिज़ोल्व नहीं होते। और जितने भी हमारे कार्बोनेट जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, ओके, वो ये हैं। इन मेटल्स के कार्बोनेट पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। इसको डिज़ोल्व करने के लिए डाइल्यूट HCl यूज़ करना पड़ता है। लेकिन जो लेड कार्बोनेट है ना, वो आपका डाइल्यूट HCl डालने पर भी डिज़ोल्व नहीं होता। सो ये आपके वाइवा के लिए कुछ यहाँ से क्वेश्चन बनते थे, तो मैंने आपको यहाँ पे इसके बारे में बता दिया। सो लेट अस स्टार्ट विद एनालिसिस ऑफ zero group, which includes ammonium ion. So first of all, we do the smell test. If you add a pinch of salt with a drop of water in between your thumbs, then ammonical smell comes. But it is not necessary that always you will get the ammonical smell. So what you do, next level, you take the salt, okay, and heat it with concentrated solution of NaOH. If ammonical smell comes, ammonical smell or ammonia gas evolves, it means that ammonium ion is present. Okay, and next is the confirmatory test. And when to the same solution, if you pass the drop of Nessler reagent, K2HgI4 is the formula. So when you add Nessler reagent, then chocolatey brown precipitate is formed. Okay, so next is the analysis of group number 1. Suppose group number 0 is absent, then we go to group 1. Okay, so in group 1 includes lead ion, silver ion and mercury ions. Okay, so in the present context we will study only the lead ions. Okay, because silver ion we don't give in exam, and similarly the mercuric ion is also due to its poisonous nature, we don't give it in practicals. So what you have to do, you have to take the salt and you have to dissolve it first in the cold water, and if it doesn't dissolve, then you dissolve in warm water, and if still it do not dissolve, then we add dilute HCl. Okay, on adding dilute HCl we get a clear solution. Okay, and in that solution and when you get that clear solution, it means your group 1 is absent. But if you do not get clear solution, then it means your group number 1 is present. Now we do the testing of confirmatory test of the lead ion. Okay, so to the salt solution we add potassium iodide, and if we get yellow precipitate, it means lead ion is present. And you can also add to the salt solution potassium chromate, again you get yellow precipitate. Okay,
So these are two different tests. And suppose group 1 is absent, leadine is absent, then you do testing for the group 2. And group reagent here is H2S gas in addition to dilute HCl, as I told you. Upon adding these gas and acid, if you get black precipitate, it means your copper ion is present. Then you do the confirmatory test for the copper. How you do? In the salt solution, you add dilute ammonia or ammonium hydroxide, same thing, in excess, okay. And on adding, if you get blue, deep blue color solution, it means your copper ion is confirmed, okay. And there is another confirmatory test, potassium ferrocyanide test, to the salt solution. If you add acetic acid and potassium ferrocyanide, you get chocolate brown precipitate. It means your group number 2 or the copper ion is present or confirmed, okay. And if in place of the black precipitate you get yellow precipitate, it means arsenic ion is present, but we never give this ion for the testing. Now suppose you don't get any precipitate on adding H2S gas and dilute HCl, which was the group reagent for group number 2, okay. If you don't get any precipitate, then you do group testing for the group number 3. And what is the group reagent for group 3? It is ammonium hydroxide and ammonium chloride, okay. Upon adding these two chemicals, if you get reddish brown precipitate, it means ferric ion is present. And if you get white precipitate, it means aluminium ion is present. And now you do the confirmatory test for the ferric ion, okay. To the salt solution, you add potassium ferrocyanide solution, and if you get Prussian blue color, it is very bright blue color, it means your ferric ion is confirmed, okay. And if you get white precipitate, it means aluminium ion is definitely present. Now you do the confirmatory test for the aluminium ion, which is Lake test. What you do, to the salt solution you add hydrochloric acid and few drops of blue litmus solution, and to this you add excess of ammonium hydroxide, okay, excess of ammonium hydroxide till it develops blue color. And in observation you find that blue precipitate floating in the colorless solution. It is very beautiful test. ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं और बिल्कुल कलरलेस सॉल्यूशन में वो प्रेसिपिटेट हमें तैरते हुए मिलते हैं. इसका मतलब आपका एल्यूमिनियम आयन इज कंफर्म्ड. सपोज आफ्टर एडिंग द ग्रुप रिएजेंट which was ammonium hydroxide and ammonium chloride, you don't get any of these precipitate. It means group number 3 is absent, and now you do group testing for group number 4, and the group reagent is H2S and ammonium hydroxide. This time we use ammonium hydroxide, not dilute HCl. So after adding these two chemicals, if you get precipitate, okay, if you get black precipitate, it means cobalt or nickel may be present. If you get skin color or flesh color, it means manganese ion may be present. And if you get white precipitate, dull white precipitate, it means zinc ion is present. Okay, now you do the confirmatory test for the cobalt or nickel ion. Then according to the color of the precipitate that you get, okay, suppose you get black precipitate, then you do the confirmatory test of the cobalt, which is potassium nitride test. So what you do, to the salt solution you add NH4OH, and then you add acetic acid CH3COOH, and then you add potassium nitride KNO2, and you warm it. Upon warming, if you get yellow precipitate, it means cobalt ion is confirmed. Okay, now if you don't get this yellow precipitate, it means you have to shift to the testing of nickel ion. Okay, for the nickel ion, DMG test is there, dimethyl glyoxime test. So to the salt solution you add ammonium hydroxide solution and few drops of DMG, and observation, if you get bright rose red precipitate, it means your nickel ion is confirmed. Okay, if
you get flesh colored precipitate. But this manganese ion you need not to remember, because I already told you we don't give you the colored salts in at least in the 12th class. Okay, and next is zinc ion. Yes, this is very important, because zinc salts are colorless. So if we get white precipitate in the group testing, then we have to go for the conformity test of the zinc ion. So it is sodium hydroxide test. So to the salt solution, original solution, clear solution, salt solution, एक ही बात है. In this you add NaOH solution dropwise. If you get white precipitate, okay, if you get white precipitate, it means zinc ion is present. If you further increase the sodium hydroxide drops, then these white precipitate get dissolved. Okay, so this is the testing of the zinc ion. Now if suppose your group number 4 is absent, after adding your group reagent you are not getting any precipitate for the group 4, it means you have to switch for the group testing of group 5. Now in group 5 the group reagents are ammonium chloride, pinch of ammonium chloride, then ammonium hydroxide. You heat or warm it and then you add ammonium carbonate. Okay, after adding these three chemicals, if you get white precipitate, it means your group number 5 is present. It may be barium, it may be strontium or calcium. Okay, now these all members of the group 5 gives flame test very easily. So you need not to worry about doing the wet test. You can directly on the basis of flame test write your answer. Okay, so barium gives a grassy green color flame. Okay, when this salt containing barium ion is mixed with dilute HCl, and with the help of platinum loop we put it in the oxidizing flame of the burner, then grassy green flame is produced. It means your barium ion is present. And if in the flame test crimson red color is appears, a very bright red color it means your strontium ion is confirmed. And if in the flame test you get a brick red color flame, it means your calcium ion is present. Okay, so this is one of the testing, and you can also do wet testing. So in wet testing you have to always start for the testing of barium. If barium is absent, then you go for the testing of strontium, and if strontium is absent, then you do the wet testing of the calcium. This sequence you need not to you have to remember. Okay, so you got the white precipitate after adding the group reagent. It means your group 5 is confirmed. Now to the salt solution, when you add potassium chromate solution and you get yellow precipitate, it means barium is confirmed. And if you add to the salt solution ammonium sulfate and you get white precipitate upon warming, it means your strontium is confirmed. And if to the salt solution you add ammonium oxalate along with the ammonium hydroxide, if you get white precipitate, it means your calcium ion is confirmed. So you have to remember this sequence: barium, calcium, strontium, and you remember the group reagent: potassium chromate, ammonium sulfate, ammonium oxalate. Okay, white, yellow, white, white. Okay, like this. So you can do the testing. You can remember all the wet test also. Suppose you don't get any precipitate in group number 5 also, it means your group 6 or magnesium ion is present. Okay, but again let me tell you, dear students, we never give this magnesium ion because it is a very lengthy process to write the salt analysis procedure for the magnesium ion. But for your knowledge, I am telling there is a test named ammonium phosphate test. So what we do in the salt solution, we add ammonium chloride, ammonium hydroxide in excess, and then we add ammonium phosphate solution. Okay, and then we shake it, or we make use of glass rod to stir the solution, and after this we get white precipitate, which indicates the presence of magnesium ion. This was all about wet test of basic radicals. Hope you enjoyed the video.
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताइए। और अगली वीडियो में हम आपको वाइवा क्वेश्चन सॉल्ट एनालिसिस के डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।